वेलकम टू द शो। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट्स में क्या चल रहा है। कुछ स्टॉक टेक्स, ऑयल एंड मार्केट का ट्रेंड क्या है। मेरे साथ है परविंदर नागरा, मैं हूं अतुल। सो लेट्स स्टार्ट विद परविंदर फर्स्ट। परविंदर, सबको बताओ कि व्हाट्स योर हिस्ट्री विद स्टॉक मार्केट्स। तुमने मार्केट्स कब शुरू करी, अभी तक तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है स्टॉक मार्केट्स के साथ। मेरे फादर वाज लाइक he was a bank manager, right? तो जब भी कोई he was at home buying and share, there at that time कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो था नहीं। ओके। तो मैं सोचता था it was I was curious what he's doing, so then उन्होंने बताया कि this is called investing, so which picked my interest, right? उसके बाद कनाडा में आए 2017। I remember पहली बार टीडी का शेयर बाय करते हैं, राइट? एवरीबडी जस्ट वांट टू बाय बीएम और टीडी, राइट? सो हम्म। आई बॉट टीडी, सम माइक्रोसॉफ्ट, हैड कौन सम से ईयर लॉस, कौन से ईयर में? इट वाज लाइक अराउंड 2016। ओके। 2016 में मैंने शेयर लिया, टीडी लिया मैंने, ओके। माइक्रोसॉफ्ट लिया, made a little bit of money, right? And then I did not know about anything like stop loss, like when to sell, when to buy, right? I think Microsoft was at about 175, TD वाओ। somewhere about 70 to 80. ओके। माइक्रोसॉफ्ट मेरे ख्याल से अभी चल रहा है अराउंड 400 450, राइट? Yeah, वाओ, yeah, नाइस yeah, नाइस। बेस्ट टाइम टू बाय yeah, माइक्रोसॉफ्ट इन 2016। ओके, और फिर आगे? yeah. And then of course, I was talking to my dad, कि अभी लॉस हो रहा है, क्या करें? He's like, yeah, that's a part of investing, अगर लॉन्ग टर्म रखोगे, like it's a good company, it's gonna show you profit. Started taking seriously, trading in 2018. 2018 में, ओके। हाँ, 2018 में मैंने बुक्स पढ़ी, थोड़े मोटे हमने ट्रेडिंग कोर्स किए, राइट? हम्म। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम डे ट्रेडिंग. So, of course, the first time you just see a loss, you're blowing up accounts, which is like everybody do that, right? तो कुछ शेयर कर सकते हो? पहले कौन सी बुक्स पढ़नी शुरू करी थी? कुछ शेयर कर सकते हो? Reminiscences of Jesse Livermore. या वेरी इट्स वेरी फेमस बुक, यस। The second book, how to make 1 million in this, how I made 1 million in the stock market, by ओके। Nicholas Darvas. ओके। Or and the third one, how to make money in stocks. After I just stopped day trading, I started day trading, and then now I'm just like more into swing trading, which is ओके। accordance with my personality. So I just buy shares for a week or 2 weeks, 2 or couple of months, something like that. So I don't have to go through every day. So I think it's four types of trading, which is called day trading, ओके। swing trading, ओके। and then position trading, ओके। and then called buy and hold, right? Which is called investing. ओके। So day trading is like every day you just buying it and then just selling it, right? ओके। At the when market जब ये हमारी क्लोज होती है, उसके बाद आपको पता है कि आपका आज प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, right? ओके। Or then swing trading can be more than couple of days to goes through like 4 months or something, right? ओके। और जो position trading है, at least has to be 6 months. ओके। 6 months to 3 years, 4 years, not like buy and hold, right? ओके। तो आजकल उसके आप जो बाद स्विंग ट्रेडिंग करते हो, वो स्विंग ट्रेडिंग करते हो बेसिकली, जो उसका टाइम स्पैन है कुछ डेज से लेके कुछ मंथ्स तक, राइट? या ऑसम ऑसम। तो मार्केट में अब क्या चल रहा है? मार्केट में अभी बुलिश मार्केट है? मार्केट ऊपर जा रही है कि अभी रिसेशन? मैं सुन रहा था टीवी पे, मेरे काफी फ्रेंड्स काफी वरिड हैं कि रिसेशन आने वाला है, न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका फोड़ देगा ईरान के ऊपर। तो व्हाट डू यू थिंक कि मार्केट में अभी बुलिश है कि अभी बेचने का टाइम है, खरीदने का टाइम है? क्या करना चाहिए? क्या कैन यू शेयर सम डिटेल्स ऑन इट कि क्या लगता है? व्हाट्स योर व्यू ऑन द मार्केट? so let's start from triple Q, which is Nasdaq. तो ये जो अब So चार्ट चार्ट दिखा रहे हैं, जस्ट जस्ट टू मेक श्योर कि सब वी आर ऑन द सेम पेज। ये जो चार्ट है, नैस्डैक ईटीएफ है, एंड इसका टिकर सिंबल है क्यू क्यू क्यू, राइट? triple Q, और yeah. और ये कितने टाइम फ्रेम का चार्ट है? ये 6 मंथ्स, 2 मंथ्स? This is a daily, and I can ओके। switch to weekly. ओके। So it have a better picture like by weekly. सो ये वीकली चार्ट है, और इससे So क्या पता लग रहा है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन?
सो इससे क्या बात चल रहा है कि 5 हफ्ते हो गए, लाइक इट्स जस्ट गोइंग ग्रीन एवरी वीक। सो या मार्केट ने 20% इन 5 वीक्स इट्स अप तो ओके आप यहाँ पे कुछ नहीं सोच सकते कि लाइक मार्केट नीचे जाएगी या कुछ भी जाएगी। मार्केट इज एट ऑल टाइम हाइस ओके उसके बाद में S&P 500 विद टिकर इसका है SPY, ओके सेम थिंग 5 वीक्स हाई, राइट। तो मार्केट काफ़ी देर कंसोलिडेट कर रही थी, जैसे अक्टूबर 2025 से अभी अप्रैल तक इसने मार्केट ने कुछ नहीं किया, कंसोलिडेशन किया, राइट। एंड इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ सेलिंग गोइंग ऑन ओवर हियर, राइट। तो ओके कभी लाइक लोग पैनिक हो जाते हैं एंड दे वर सेलिंग सम, राइट। एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज क्वाइट बैड, बट आई वाज now like इतने देर हो गया, I just get into cash, right? So I get stopped out from the stocks, I'm already out. सो अभी इस वक्त आपकी जो करंट पोजीशन है, यू आर इन कैश और यू आर होल्डिंग योर पोजीशंस? I'm holding positions now, like it's already all-time highs. I just started buying at a gap up, when this market had a gap up, and then you start buying a little, you start putting a little bit of exposure, right? आप ओके अगर 100% position होती है आपकी, you can start from 10 or 20%, and if ओके this market is started selling and then you are out already, right? तो ओके ओके आपको प्रोग्रेसिव एक्सपोजर थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, और देन यू आर अप। बट इफ यू आर बाइंग नाउ यू आर लिटिल बिट लेट, बट ऑफ ओके कोर्स द पुल बैक विल कम एंड देन वी कैन गो अगेन, राइट। सो दैट मीन्स अपनी पोजीशन धीरे धीरे बनानी चाहिए, पहले 10%, फिर जैसे अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रही है तो 10% और ऐड करो, धीरे 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 जस्ट बिल्ड अप योर पोजीशन, राइट? या अगर आपको मार्केट फीडबैक अच्छा दे रही है देन यू बाय मोर, राइट। एंड देन अगर आप लॉस में जा रहे हो देन मार्केट इज टेलिंग यू डोंट बाय। ओके अगर किसी ने आज पोजीशन, जो हमारी किसी ने वीडियो देखी और उसको आज अपनी पोजीशन इनिशिएट करनी है फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, so what will be the best time to make the position? Would you recommend wait या फिर just get into the market with 10% or 20%? Yeah, as I tell you, like I'm not a financial advisor, so this market, we have to take care of your risk, So just call your financial advisor what to do. But just for educational purposes, we can see like these are my focus list, right? So Okay. these are the stocks I'm looking every day. So एक आपको स्टार्ट अभी दिखा सकते हैं, लेट्स से AXTI, राइट। आजकल द मार्केट इज अबाउट ऑल अबाउट सेमी कंडक्टर्स, राइट। Okay. अभी सेमी कंडक्टर्स की थीम चल रही है, एवरीबडी नीड्स चिप्स। So which company is this? Is this a semiconductor company? दिस इज रिलेटेड टू सेमी कंडक्टर्स। Okay. दिस इज रिलेटेड टू AX. सेमी कंडक्टर AXTI। Okay. सो सेमी कंडक्टर लाइक दिस इज memory chip scientist corporation. This is at 1187. या मेमोरी में बुल So मार्केट चल रही है, मेमोरी आजकल वैसे भी खरीदना बहुत महंगी हो गई है, और विच कैन बी सीन इन द चार्ट्स, राइट? yeah, so this one, as I tell you, this one was in August 2025 was $48, right? ओके तो उसने उसने 1500% रिटर्न दिया है, because like they don't have that much memory in their supply, and people ओके are just buying and buying and buying. So you can see in 8 months 1500% return. ओके या less than a year, 1500%. Yeah, Okay, that means yeah, you have to choose the right stock. If you want to multi-bag returns, you need to choose the right stock. yeah. Okay. And you have to get into the right theme, right? So if you are in the fintech, if you say I want to buy some software, I want to buy like some fintech companies, they are not doing much, like Sophie, they are not doing much. So like, and these stocks, I'm showing, these are not penny stocks, Mm-hmm. these are the stocks owned by big hedge funds, big banks, right? So it's at already 120. But So this is even CoreWeave, right? This is CoreWeave, this is right? core, this is core weave. So like
in a day, this one goes like 5% up, right? Mm-hmm. 10% up, because this is a huge demand here. So every daily volume we can see is $3 billion. So this stock is not owned by retail like us, right? This stock owned by banks, they have backing up on these stocks, right? Okay. तो ये चीज है। Okay. और दो और स्टॉक्स में, हाँ जी। और इंटेल, मैं अभी न्यूज़ देख रहा था तो इंटेल इज इन 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 द न्यूज़ की यूएस गवर्नमेंट इज बैकिंग इंटेल एंड इंटेल स्टॉक इज गोइंग क्रेजी। सो व्हाट डू यू थिंक, किसी ने इंटेल लेना हो, डू यू थिंक इट्स द राइट टाइम? और या फिर सारी मूव हो चुकी है, या डू यू थिंक स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता बिकॉज एक सेइंग है, लाइक विच स्टॉक कैन डू डबल, राइट? है? हम्म। सो द वन विच ऑलरेडी डबल विल डबल। हम्म। ओके। सो दैट मीन्स सो नो वन नोज व्हाट इज द हाई पॉइंट, किसी को नहीं पता व्हाट इज द हाई पॉइंट, जो डबल हुआ है वो नो, यहाँ से फिर डबल हो सकता yeah, nobody knows about it. So look at this. This is a monthly chart of Intel. है। हम्म। So from 2020 to 2026, it didn't do much. Hmm. Yeah, yeah. For the longest time, it was not doing anything because Yeah, TSMC was the main big guy in semiconductors. yeah. So now this one is 6 years base. So they Oh, say longer the base, higher in the space. oh, really? Okay, 68 तो base है अभी, ये 99 पे, so that means the run has just started. Run just started. Of course, now it's a little bit of extended, like 40%, 47% up from the breakout, right? Mm-hmm. So look at it, the earnings. Earnings is 1400 surprise. Mm-hmm. Oh, 1400. Okay. So they were expecting 0.019, but they Mm-hmm. reported 0.29, which Okay. is like 1400 above the estimate. Okay. So अभी अभी ये, like 99 पे, I think it just can keep going like this. But if it's me, I will just wait if it do the retest here, like Okay. closer to 79. But it can do whatever, but I am not buying here because here I cannot manage my risk, right? So if आप अगर यहाँ पे बाय करोगे, आपको एटलीस्ट $85 तक तो रूम देना पड़ेगा, बिकॉज इट दैट्स अ हेल्दी पुल बैक, राइट? Okay. Either buy at 85, या तो 85 पे buy करो, या फिर अपना stop loss 85 से नीचे रखो, right? Do you think that's the right Yeah. strategy? Okay. uh 85, like right now I think nobody should buy it. Okay. Okay. But if you have the tendency to have bigger, like you can manage bigger risk, Mm-hmm. at least $80, which is like if koi investing में हो, like better, this is better, like कई लोग करते हैं buy and hold. I'm not a fan of buy and hold, right? So Okay. like the more you go down, harder is to come back, right? And at the end, can you open oil chart, WTI crude, and like give us your idea what you think about oil? WTI. Crude, yeah, yeah. Yeah, So so this is, let's see the weekly chart. So oil was up in 2022. Remember, like yeah, after COVID, it just started booming again, right? yeah. When इसने people टॉप started to have, इसने टॉप बनाया था yeah. 2020 में, जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी, तब से ऑयल गिर Hmm. रहा था। और अभी Yeah, ये जो यूएस और ईरान की वॉर शुरू हुई है, उसके बाद ऑयल ने बाउंस किया फ्रॉम 56 टू 100 और 99, व्हाटएवर इट इज। या तो मुझे नहीं लगता कि लाइक क्योंकि ये सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, तो आई जस्ट गो मोस्टली विद द सॉफ्टवेयर एंड लाइक बिटकॉइन एंड कंपनीज लाइक दिस, हम्म। but like the banks and hedge funds, they keep rotating money, right? So हम्म। they go first, they go for softwares, then they buy the oil, then they sell oil, then they go for banks, then हम्म। they sell banks, then they go for cyber security companies, then they sell those, then they go for like the money just keep rotating, right? तो ओके। इसका like of course it can do anything, if it breaks out here, as I told you, like higher the base, higher in this space, right? हम्म। Bigger the base, higher in the space. So
3 years, if it's starting going again, cutting 113, हम्म। it can rip hard. ओके, सो जो भी ऑयल इन्वेस्टर हैं या फिर जो भी हाई ऑयल प्राइसेस से परेशान है, अगर ये 113 से ऊपर जाएगा तो दैट मींस देयर इज मोर रूम फॉर ऑयल टू गो अप। ओके, लेट्स सी व्हाट Yeah. फ्यूचर अनफोल्ड्स कि ऑयल के साथ क्या होता है। Or the other thing is like, just be open. Other thing is like it can do 125, go to 130 and just start selling again. ओके। ओ। Because yeah, so like, some stocks we can buy on strength, but हम्म। cyclicals I learned is like it's always better to buy on a weakness. So ओके, now it's already a strength. You should be buying somewhere here, तो because इट्स। let's see this one. So as you see is like, 63, हम्म। you got into 2023 and you say like it's holding, it's not going down 63, and then it just kept going, right? हम्म। And it's already 2024, and then you see a little undercut here, right, in हम्म। 2025. या। So start building your position maybe here, right? हम्म। And then if you are a fan of oil, but I'm not, I don't know how to get into these instruments, right? ओके। So SI, yeah. No, anyways, it was very informative session. Thank you so much for all the knowledge. And what we will do is we will connect in the next video, uh, Yeah. and we will share some stock ideas, market update, what we feel about the market में का trend क्या है. So I hope you enjoyed this session, and we'll see you next time.